इट इज़ ओके टू बी ओके एंड वॉन्टिंग टू बी फाइन. हमें वो एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है. एंड जब इंसान खुद चेंज होना चाहता है तब वो इंसान नेसेसरी स्टेप्स लेता है टू एक्चुअली बिल्ड अपॉन एंड एक्चुअली चेंज. डिसाइड आप तभी करना चाहते हो जब आपको कोई और अदर ऑप्शन नहीं दिखता है. आई वुड ऑलवेज से कि देयर आर टू sides to a coin. It's not black and white, you have to find your grey. And जब आप वो ढूंढ लेते हो तो you can see that कि सब गलत नहीं है लाइफ में या सब खुश नहीं है. अगर सब अच्छा होने लगे तो you wouldn't know कि खुशी क्या होती है. So you have to face the negatives to realize कि positive कैसा फील करता है. आज हम बहुत ज़्यादा काम की बातें करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगी आपसे पूछना कि आपके बहुत सारे प्रोफेशंस हैं. You are an image consultant, then you are a rising entrepreneur also, then you are author also, then you also do CBT. Yeah. तो इनमें से आपका फेवरेट क्या है एंड व्हाट डू यू थिंक कि सबसे ज़्यादा लोगों को किसकी ज़रूरत है? I think मेरा favorite has to be life coaching. Because उस मेथड से लोगों को हेल्प ही नहीं, लोगों को एम्पावरमेंट मिलती है. बिकॉज लाइफ कोचिंग डज नॉट ओनली टीच यू नो खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करना. लाइक सपोज लाइफ कोचिंग ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आओगे एंड आई गिव यू द सोल्यूशन. इट इज़ अबाउट आप मेरे पास आओगे, यू टेल मी योर प्रॉब्लम एंड मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ मेथड्स एंड प्रोसेसेस होंगे जो मैं करूँगी एंड आपके साथ ऑब्वियसली. एंड देन उससे यू गेट टू नो हाउ टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स. एंड उससे नॉट ओनली आप उस जिस पीरियड में आ रहे हो मेरे से उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं, बट आगे चल के वट एवर यू मे फेस उस सोल्यूशंस यू नो यू गेट देम एंड यू विल फिगर इट आउट योर प्रॉब्लम्स, राइट. बट डोंट यू थिंक कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखते हैं एंड दे फील वेरी ऑकवर्ड टू शेयर इट विद एनीबडी? I think what you say is very true is society में. And it is because your environment is of sorts जहाँ पे आपको या तो acceptance नहीं मिल रहा या तो you feel like आपका problem you know it's not that important कि matter नहीं करता है to you know even share it with people. But personally whatever I've experienced I feel like sharing it will not only let other people know what you're going through but also make you aware कि you know आप what problems do you face, what is your mindset at. And the fact that you said कि you know लोगों को problem आती है to come in front and speak up. And I think वो change तब होगा जब लोग accept करेंगे कि problems are normal. It is okay to be okay and wanting to be fine. एंड उसके लिए आई थिंक हमें वो एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है. एंड जब इंसान खुद चेंज होना चाहता है तब वो इंसान नेसेसरी स्टेप्स लेता है टू एक्चुअली बिल्ड अपॉन एंड एक्चुअली चेंज. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली ऑफ आवर एज जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है. अगर हम लड़कियों की बात करें तो एक सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स शादी के लिए प्रेशर बनाते हैं, ठीक है. अगर लड़कों की बात करें तो एक सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स जॉब के लिए प्रेशर बनाते हैं. एंड दीज pressure, these thoughts becomes 3 AM thoughts, right? Yes. So how to handle that? जो मेरा बुक है 3 AM Thoughts, that focuses on your negative thoughts जो आप खुद अपने आप के लिए बनाते हो. एंड आई गेट कि environment उन thoughts को impact करती है एंड obviously alter करती है जो आप सोचते हो. एंड उसमें the impact that is there, it is so ये कहता है कि जिनके साथ आप रहते हो उनके जैसा आप बनते हो. एंड आई फील लाइक जितने आपके थॉट्स नेगेटिव रहेंगे उतने ही आपके एनवायरनमेंट अराउंड विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव. एंड व्हेन यू से दैट द सोसाइटल प्रेशर दैट कम्स इन, इट इज़ वेरी ट्रू. बट आई फील लाइक अगर तुम्हारे लाइफ के प्रायोरिटी सॉर्टेड है, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, तो दूसरे कहते लाइक शाहरुख खान सेड इट बेस्ट, जो दूसरे कहते हैं इट डज़ नॉट मैटर बिकॉज यू नो योर सेल्फ एंड यू नो कि अगर मैं ऐसा हूँ इट इज़ फाइन इफ़ माई पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट मी बिकॉज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. एंड आई फील लाइक अगर तुम खुद पे इतना कॉन्फिडेंस लाते हो कहाँ ना कहाँ योर पेरेंट्स विल ऑलवेजली स्टार्ट यू नो बिलीविंग कि यू नो या इफ़ ही ट्रस्ट हिमसेल्फ दैट मच even I should put my trust in him. And I feel like that comes with conscious thinking. अगर suppose आपका thought है कि you know what मुझे job ही करना है, शादी नहीं, fine, that is your priority. That might not be the priority of your parents.
एंड आई फील लाइक इफ़ यू मेक दम अंडरस्टैंड कि ये मेरी प्रायोरिटी है एंड क्यों बननी चाहिए उनकी भी, एंड आई थिंक इफ़ यू कैन कम टू अ कॉमन ग्राउंड is very important, because then आप खुद के साथ you're in peace with yourself and the people you're around with. But what I think is sometimes जैसे आप we were talking कि 3 AM thoughts भी दो तरह के होते हैं. Correct. है ना. तो बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं भी अपने फ्रेंड से बात करती हूँ तो मैं यही सुनती हूँ कि यार रात को मैंने सोचा, और वो नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं कि यार अगर ऐसे हो गया तो मतलब कुछ ऐसा होता है कि सच में कि रात को हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो कुछ पॉजिटिव तो आता ही नहीं है माइंड में. I think, and with personal experience I see this, कि जब हम लोग where our body is calm, your environment around you is very calm, your brain has the chance to go into places and start thinking. And जब उसे वो freedom मिलता है, humans tend to look at that 1% that's negative, then the 99% that would have been good, या जो खुश हो सकते थे वो. Because एक human tendency होती है, again, it's like your cognitive behavior to look at negatives. Okay. Because it's more easy. Exactly. Yeah. Okay. And because of that, आप अपने दिमाग को ऐसा shape करते हो कि यार this is negative in my life, I should only look at that and make it perfect. But we forget कि the 99 that is there to help you grow, which is what the 3M thoughts does. It will help you like change your that 1% of negative thought that creeps in anyhow to actually mold it into something जिससे आप आप खुद को पुश कर सको. एग्जैक्टली मतलब आप मोटिवेट हो सको. Correct. मतलब हम भी ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादातर सुसाइड लोग करते हैं तो या तो वो अकेले रह रहे होते हैं या काफ़ी लोग ऐसे स्टेप्स रात को उठाते हैं क्योंकि बिकॉज आप तब बिल्कुल अकेले होते हो. तो अगर किसी के भी माइंड में ऐसे सुसाइडल थॉट्स आए, हाउ कैन दे कंट्रोल इट? I would say I'm not that I'm not an expert in it's called happy coaching. Right. That helps in changing and transforming a suicidal mind. Right. But if I would have to give my perspective in this, मैं कहना चाहूँगी कि सुसाइड आप तभी करना चाहते हो जब आपको कोई और अदर ऑप्शन नहीं दिखता है. And I would always say कि there are two sides to a coin, and it's not black and white, you have to find your gray. And जब आप वो ढूंढ लेते हो तो you can see that कि सब गलत नहीं है लाइफ में या सब खुश नहीं है. लाइफ हैज़ टू बी अ बैलेंस, क्योंकि अगर सब अच्छा होने लगे तो you wouldn't know कि खुशी क्या होती है. So you have to face the negatives to realize कि पॉजिटिव कैसा फील करता है. आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, मतलब बिल्कुल वाट लगी हुई है उसके मेंटल हेल्थ की, एंड वो आपके साथ कंसल्ट कर रहा है एंड यू सॉ हिम ग्रोइंग, यू सॉ हर ग्रोइंग कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला है? I am just 18 and I haven't been trusted with such severe cases. Okay. But I do try to coach small kids, like kids of age like 13 and 14, because I feel like तभी वो बच्चा shape होता है, like you're getting molded into that stage, and I feel like तब transform करना is very important, because तब अगर आप सही mold करते हो तो आगे जाके these baggages that you carry with you कम होती है. And I feel like this is still my struggle कि asking somebody to trust me who is older than me, कि आप मुझे आपके experiences से trust करो, because they feel like इसने खुद ऐसा experience नहीं किया, how will she connect? Right. And I feel like that if that changes, then I would be able to help more people, or life coaches would be able to help more people, because तब वो you feel like it's not about experience but about how you use that knowledge. Exactly. And जब तुम सही questions पूछते हो, सही answers निकलना is given. Easy हो जाता है ना? Exactly. Right. But in such a small age, I'll say it small age because a lot of people around you, ठीक है, you must be thinking कि काफ़ी लोग experience भी होते होंगे and आपको लगता है क्या बोल रहा है, कुछ sense नहीं बन रहा है. So how you connect with those people, and do you try to convince them that I'm 18 but hello, I'm mature. I know what you are saying doesn't make sense at all. There have been बहुत सारे instances हुए ऐसे जिसमें I've gone to events and courses and seminars जहाँ पे I've been one of the youngest, or I've been not उतने experience के साथ, but तभी I feel like
if I'm here, I can give in my perspective to them. And maybe तभी उनके life में कुछ change होता है, because तभी they're around people with the same experiences, with repetitive journeys, with repetitive emotions and thoughts. Because age similar होती है तो you tend to think almost the same way, or you tend to think, you know, sort of the same way. But if I try to bring in my different perspective in it, I feel like that is what is gonna change the entire environment around. And which is why I take that perspective whenever I go to a seminar or a course. Exactly. I also think it's very important to trust people. Correct. And I also think that age doesn't matter. If somebody is younger than you and stating a very nice point, I don't think so आपको ये सोचना चाहिए कि ओ अच्छा कैसे बोल रही, ये बताएगी हमें. बिकॉज हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर ये सोचा जाता है. Exactly. Right? Because अब जैसे आई एम ऑल्सो younger one in my family, I'm the youngest one, and if I tell them or if I advise, ओहो तो हमारे घर में रहता है Accept ही नहीं होता. Accept ही नहीं होता. अभी तुम्हें नहीं पता है कुछ. Yeah, but I think मेरे scenario में थोड़ा सा different था, because my parents have always been the one who's like, you know, अरे तू कर लेगी, तू जा, you know, I know कि. And I feel like ये बच्चों के इसमें mentality है कि, you know, my parents don't know me or don't understand me. But मेरे हिसाब से I feel like parents can see the true potential, or, you know, they know how you can shine well. And I feel like sometimes you might want to rebel, but kabhi if you guys come to a common ground, and if you find a common dream or a dream that you guys build together, you're more with peace, and you get what you want as well. Plus you have your parents support. हाँ, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक्टर बन रहे हैं, हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे. ये हमारे को भी मतलब we have done a lot of interviews with therapists, and काफ़ी ज़्यादा questions इसी पे आते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारा करियर नहीं समझ रहे हैं. ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद उनको पता है कि आप में वो पोटेंशियल नहीं है, आप टाइम वेस्ट करोगे या मे बी आपने अपने उस आर्ट से or you've not made them believe कि you know कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, to you know actually get into that field. क्योंकि suppose अगर मैं business में जाना चाहूँ, तो I have worked with my dad already, so he knows कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ. And इसीलिए he pushes me कि दोनों you कर सकती है, you can go to this deal, you can go to this meeting, and you can do all of this. And then tabhi not only like, you know, creates the safe space for me, but it creates the desire कि, you know, मैं आगे एक step और लूँ. You know, what he says, I'll go one more step ahead, take the extra mile and make him believe, you know what, आपने potential देखी, I can show you more. Exactly, that is very important. That's why I say कि parents को मना लो, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा नेगेटिव उनका इमेज नहीं बनाना चाहिए. अच्छा, अब हम थोड़े 3M थॉट्स में थोड़े अच्छी बातें करते हैं. अगर हम 3M थॉट्स हमें पॉजिटिव आते हैं, ज़्यादातर लोगों को 3M पे मतलब होता है ना, रोमांटिक हो जाते हैं, कुछ तो कुछ और भी हो जाते हैं. बट सो हाउ व्हाट डू यू थिंक कि अगर जैसे हम लड़कों की बात करें, ज़्यादातर मैंने भी नोटिस किया है, एंड हम गर्ल्स ग्रुप में बात करते हैं कि सबको रात को ही ऐसे उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं. So what do you want to say about that mentality कि ऐसा क्या हो जाता है? I feel like तभी, as I said, your mind is free. Right. You are free to feel any emotion you want. And ज़्यादा करके days में, you know, in the daytime, people are occupied with their other stuff. Exactly. तो जब उनको overthinking का time मिलता है, जब उनको समझता है कि you know what, I can do this, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी message कर सकता हूँ किसी को. And I think तभी वो message करना doesn't take a lot of guts. It just takes वो थोड़ा you know कि क्या ही हो जाएगा. You know, I'll just say कि you know I was just overthinking and stuff. But उस time पे जो effect पड़ता है is what they don't think about. तो if I am not saying कि वो control हो सकता है, but I am saying कि it can be toned down a bit or you know tamed a bit. I also think कि a lot of people text their exes also 3M कि यार क्या हो गया था, ये वो बात है. And I think at the other end
उनकी ओवर थिंकिंग ज़रूर चल रही होगी कि क्या पता ये वापस आने के लिए बोल दे रिलेशनशिप में, ये क्या पता ये कुछ बड़ा सीन क्रिएट कर दे। एंड हमारे जनरेशन की कह लो या अब जो न्यू जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन है, उनको भी इन सब चीज़ों में उनकी ज़्यादा टेंशन है। अभी रिसेंटली देयर वाज अ मर्डर आउटसाइड द कॉलेज यूनिवर्सिटी इन दिल्ली कि बिकॉज ऑफ अ गर्ल, ठीक है, तो आपस में एक लड़के ने दूसरे लड़के का मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ अ गर्ल। डोंट यू थिंक इसमें 3M थॉट्स थोड़े इन्वॉल्व होंगे? I feel like definitely because your negative thoughts tend to push you more. That's why I said कि जब तुम्हें negative, because obviously murder करना किसी का is a extreme level पे, you know, a negative thought. And I wouldn't say that it binds you, but it actually pushes you to do things जो आप कभी भी sane mind में नहीं सोचते हो. And तभी as I said कि ये process use करना of conscious thinking and rational behavior उस वे में, then I feel like वो processes change कर सकता है a mindset or these thoughts in some way or the other. Right. And if I talk about, few people who are just fighting with their own thoughts, they're not sharing it, but they know कि हमारा relationship parents के साथ भी अच्छा नहीं चल रहा है, partner के साथ भी अच्छा नहीं चल रहा है, and एक वो mental peace है ही नहीं, ठीक है, and they can't even go to a therapist because they think they are pricey or they think that they will not understand. I feel like यहाँ पर भी as soon as the acceptance is starting and it's obviously a revolutionary step that people are taking. There are a lot of communities where you can just go, speak about your thoughts, and then वहाँ पे you find connections. You find कि you know इस experience के साथ मैं match कर सकता हूँ. And then they shared कि उनने कैसे react किया, how did I react. And जैसे मैंने पहले कहा, you are who you're with. And if you are with somebody who understands you, I feel like tabhi your thoughts tend to be like more deformed and more like transformed in a way, because you get to see कि सामने वाले ने react कैसे किया, मैंने कैसे किया, and then you take a back approach and you analyze the entire perspective and you feel like, you know, this could have been different, I could have reacted this way and वो गलत था, and then आगे चलते वक्त you wouldn't do it. So I feel like joining these communities, and obviously these communities, some are free to join, some are obviously they take some price and stuff, but these free communities do help a lot. And I would just say if you join the community and find somebody who can coach you for a price that you could work with, then it is definitely the optimum option for me. Right. Great. Acha, if we talk about image consultancy, why do you think it's important? कैसे important है अपने image को, अपने styling, clothing, ठीक है, the way you present yourself. How much it is important, and why people should consult a image consultant? I'll tell you my story. जब मैंने image consultancy की थी, I was 13 and I wanted to make my image जैसा मैं, you know, how I would have desired it to be. And इसीलिए I learned image consultancy because मेरे हिसाब से when you learn as an educator के mindset में, you try to apply things more. You know, हाँ यार, ऐसा if I could teach somebody else, I could apply it to myself as well. And तभी I learned how to become an image consultant. And I would say, you know how people say कि don't judge a book by its cover, but it is a natural instinct to judge the appearances and decide in, like, you know, because it's an instinct thought. Exactly. You know, एक second में you can tell कि this person की vibe ऐसी है, this person का, you know, the personality might be like this. Obviously आगे चल के you might be wrong or you might have a different approach, but the first appearances do tend to make this first judgment that people talk about. And I feel like that's why abhi social media ko le lete hain. That's why people post so many pictures with looking their best, because they want to portray their best selves and portray whatever they desire to portray. And image consultancy basically helps you create an image जो आपको चाहिए. Like suppose अगर आप वैसे इंसान नहीं हो अभी, if you do image consultancy or if you consult an image consultant, आपको उस वे में help करता है to perfectly make that person that you want to be. Suppose now if you as a person, for example, if you want to be more approachable and if you want to be, you know, more socializing, मैं first approach लूँगी कि ठीक है आपका ये goal है, इस goal को हम outfits में कैसे बना सकते हैं,
आपके wardrobe को कैसे change कर सकता है. And then image consultancy में soft skills का भी एक part रहता है. And soft skills जब भी सीखता है कोई, they tend to change the behavior as well. Like there are common behaviors. Like suppose for example, अगर मुझे I'm in a class and मुझे answer देना है, so I will start nodding more. I will start like having a more upwards nature. And yeah, and so that the teacher instinctively knows कि हाँ इससे he knows the answer. And then other example is suppose if I try to imitate the behavior, सामने वाले को connect करना is very easy. Like suppose if I start imitating your behavior, you would feel more comfortable to be you who you are around me, which is what image consultancy teaches you. And if I feel like samne wala, and it also teaches you how to judge somebody and how to, so it's very important when you're doing business, when you're dealing with people or any other job or field, because every field requires you to deal with people. And जहाँ people आता है वहाँ images आती है. And इसके लिए I feel like it is very important to learn and to actually make an image जो आप desire करते हो. अगर कोई सीधा डायरेक्ट, जैसे हमारे ऑफिस में बहुत होता है, कोई सीधा ऑफिस से सीधा डेट पर जाता है तो नॉर्मल कपड़ों में चला जाता है. तो व्हाट डू यू थिंक कि डज इट रियली मेक्स अ डिफरेंस इफ यू टेक एन एफर्ट, यू मेक एन एफर्ट, राइट, एंड यू गेट ड्रेस अप फॉर आप एक मीटिंग के लिए तैयार हुए हो, देन यू आर गोइंग ऑन अ डेट. सो डज इट रियली मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू टेक एन एफर्ट कि यार सही सा बन के जाना है? Image consultancy में मुझे सिखाता है to smart dress. That is basically with a few options, you can create several outfits. It is not only sustainable but smart as well because it saves time, it saves a lot of efforts. But obviously, how you dress, आपके efforts दिखते हैं उसमें. Like suppose अगर मैं कोई job interview के लिए जा रही हूँ, if I dress in casuals and वो उस work का theme नहीं है, I will obviously be out of place. And not only will I not look formal, but उनको दिखेगा कि मैं सीरियस ही नहीं हूँ उस काम के लिए, कि मैंने एफर्ट्स ही नहीं डाले ड्रेस करने के लिए. एंड दैट इज सिमिलर विथ द डेटिंग अप्रोच एज वेल. इफ आई एम इन अ मीटिंग एंड मैं सीधा चली जाती हूँ, विथ अ फ्यू चेंजेस इन माई आउटफिट आई कैन लुक मोर डेट अप्रोचेबल. एंड देन इफ आई वांट टू कम बैक टू अ मीटिंग आई कैन जस्ट ऐड अ कपल मोर ऑप्शंस. Then it could completely change my look, which is what smart styling teaches you. So if we talk about again of a life coaching, अब आप इतनी सारी चीज़ें without therapy, without coaching, you can't do all of it. So there is a certain age कि जब आपको life coaching start करनी चाहिए, जब आपको ये therapy start करनी चाहिए. If we talk about CBT also, कि आपको ये एक certain age में start करनी चाहिए, और anybody who's suffering from such problems can just come and I feel like problems age देख के नहीं आती है. And suppose जो whatever I've gone through, you might have not, and whatever you've gone through, I might have not. And experiences we start as soon as we take our fresh breath. And suppose मैंने young age में, for example, if I've seen a lot of fights happening around me, मैं वैसी बनती जाऊँगी. And which is why I will create this baggage जो मैं अपने साथ carry करती रहूँगी till I feel like 25 suppose हो गई, and then I feel like society के हिसाब से this is the right age to go into therapy. पर तब तक इतना baggage collect हो गया रहेगा कि वो sort करने में इतना time लग जाएगा that I don't get to live all of my other experiences. And इसके लिए I don't think कि कोई right age है, but ये है कि you should understand कि right and wrong and different perspectives में क्या difference होता है, so that you understand कि जो सामने वाला बोल रहा है why that is important as well. You're ready to accept change is when I think you should go for therapy or go for life coaching. If somebody is not going for any therapy and is very young, is a college student, if you say, so colleges में तो बहुत problems होते हैं, relationship problems भी आती हैं, आपके friends बनते हैं, अलग भी होते हैं, सब होता है. तो आपको वो red flags जब दिखने शुरू हो तो आपको कहाँ पे रुक जाना चाहिए? If we talk about relationship, if we talk about friendship, what do you think कि वो red flags क्या होते हैं? फ्रेंडशिप के अंदर अगर हम पहले बात करते हैं कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ें हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, तो आपके लिए वो क्या चीज़ें आपको लगता है? अगर इफ़ आई से मैं जैसी हूँ, आई फील लाइक आई विल ओनली कनेक्ट विद पीपल हु आर, सो देयर आर टू एक्सट्रीम्स. या तो आई विल कनेक्ट विद समबडी हु इज एग्जैक्टली लाइक मी, और इट विल बी द केस ऑफ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट.
And I feel like the red flags that you were talking about, it completely depends on आपका comfort level कितना जाता है, और क्या कब तक आपको लगता है कि you know what, इस point के बाद मैं खुद को सहन नहीं कर पाऊंगी to be in that friend group. You know, मैं खुद को I'll start, you know, overthinking, or I'll start harming my own mental health. And फिर depend करता है कि आपकी priority क्या है. Is your priority keeping that friend group, or is that priority, you know, yourself and, you know, choosing yourself? And the right moment obviously is when you decided to be. But मेरे हिसाब से the red flag is exactly when I feel uncomfortable, or I feel like, you know what, this dosti is taking way more, you know, efforts than it actually needs, and tabhi it just has to end. Right. And what about the relationships? I feel like relationships mein, it completely depends on how you are with the other person, because relationship mein not only the other person changes, because you're very different when you're in a relationship and when you're not, when you're with the person and when you're not with the person. And tabhi if you see that change is very drastic, कि आप खुद को ही नहीं पहचान पाते हो, and you know you completely change yourself like 360 degrees, तभी I feel like, you know, you should control and, you know, be like, you know, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, and should I not do this? Because again, Shah Rukh Khan said it best, जैसे ही आदत बनती, you should decide कि is that आदत good for me or is it not good for me. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो बॉलीवुड में जो अच्छी बातें प्लस जितने जैसे उसकी फिलॉसफीज हम रील्स वगैरह में देखते हैं, मतलब मेरे को लगता है कि वही एक ही बंदा है जो थोड़ा अपने मेंटली जवाब दे देता है थॉट्स वगैरह के बारे में, जितना मैंने उसको देखा है. I feel like वो कैरेक्टर जो मूवी में था, he picked it very well, and I feel like the way he conveys emotions is why people connect with him more. And I think that is what the job of acting needs, the connect of emotions. And I feel like even life coaching mein, if you can connect with emotions more, and tabhi I feel like the person in front of you who you're consulting or coaching would want to open up to you. सो आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए इफ दे वांट टू बाय योर बुक, वेयर कैन दे फाइंड योर बुक? So my book is going to be published soon on Notion Press, Amazon, Flipkart, and Google Reads as well. The name is 3 a.m. Thoughts Turning into Forever Definitions. And my name is Priya Aswani. I'm the author. And so, yeah, do please read it and let me know how you like it. ओके, थैंक यू सो मच प्रिया फॉर योर टाइम. आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपकी बातें सुन के. I hope so too.